So hello everyone, welcome back to the channel. It's me, Vansharoda, and I welcome you to the economics class at STUDIFYSUCCESS. So in the previous lecture, we have just completed our Unit-4, that is government budget. So in this video, we are gonna start our next unit of our class 12 macroeconomics, that is balance of payment. So it is comprised of two chapters. Balance of payment is the one chapter, and another chapter is foreign exchange rate. As you guys have studied in your class 12 itself, this is the first time that you are learning this terminology, balance of trade. So anyone watching this video knows, do you have any idea what this term means, balance of trade? Anyone? Any idea? Guys, please think it off. क्योंकि अगर आप समझ के करेंगे तो it will be beneficial for you, only for you. So balance of payment का आपको क्या लगता है क्या मतलब होगा? Because it is the very first time that you are learning this terminology or this chapter. Because government budget जो था, national income जो था, और money and banking जो था या banking जो था, ये सब चीजें आप पहले सुन चुके हो. ये सब चीजें वो चीजें थी जिसके बारे में the foundation is clear to you. The foundation things that is required for this unit is clear to you. But for this chapter, there is no foundation created for you in the past. Like in the 11th or either in your junior classes, you haven't studied about this terminology. So let's get started with this chapter. So our first thing is to understand that what this unit comprises of. कि पढ़ना क्या क्या है इसमें पहले वो तो पढ़ जाते हो इसके बाद तो आगे पढ़ेंगे ना है ना. So the first topic that we will study in this chapter is what is balance of payment, what is the meaning of balance of payment, and what are the components of balance of payment. And the second topic is what happens when the balance of payment is in surplus condition and in deficit condition. These are the two topics that we'll be covering in this particular chapter, not the unit, in this particular chapter. Okay. And in the next chapter, in the chapter number 2 of this unit, we will gonna start foreign exchange rate. So in that particular chapter, we will gonna cover meaning of foreign exchange rate, types. There are three types: fixed, float, flexible, and managed rate. Okay. And then we will determine how exchange rate determined in the free market. Merits and demerits of the types and manage floating exchange rate system as a separate topic and in detail. Okay. So let's start with the chapter 1 of this unit, that is balance of payment. Okay. So I have asked you one question. थोड़ी देर पहले कि क्या पूछा था मैंने आपसे, बैलेंस ऑफ पेमेंट आपके अकॉर्डिंगली है क्या? इस बैलेंस ऑफ पेमेंट में देखो होता क्या है. बैलेंस ऑफ पेमेंट दैट इसका शॉर्ट फॉर्म हम कहते हैं BOP. दिस इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट that provides a systematic record of all the economic transactions between the residents of country and the rest of the world in a given period of time. So let's have a laser point and just understand. Yes. ये जो है हमारा वो एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है. नंबर 1 पॉइंट इज दैट इट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट. अब आप बोलोगे इको में अकाउंटिंग स्टेटमेंट कैसे आ सकती है? अकाउंटिंग स्टेटमेंट तो अकाउंट्स में आती थी, इको में कहां से आ गई? लेट्स डोंट वरी अबाउट इट. BOP जस्ट लाइक एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट. अगर हम इसको प्रिपेयर जब करते हैं, जब हम BOP की स्टडी करते हैं, तो इट इज सेम लाइक एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट, बट इट इज पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स. ओके. इंडियन इकोनॉमी को ही इंपैक्ट करती है, इसलिए इकोनॉमिक्स है. ओके. And it provides a systematic record of all the economic transactions. Transactions बहुत सारी होती है. इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कौन सी होती है? जो मनी से रिलेटेड होती है, जो इकोनॉमी से रिलेटेड होती है, राइट. तो जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है उनका जो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होगा वो BOP हमारा नोट डाउन होता है. अब इट विल बी बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है. जो कंट्री के रेजिडेंट्स होंगे उनके बीच में और बाकी दुनिया के बीच में, ठीक है, जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होती है सारे की सारी हमारे BOP में बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड होती है. ठीक है. अब बोलेंगे रेजिडेंट्स ऑफ कंट्री, तो वर्ड सुना सुना लग रहा होगा आपको. ये वर्ड, ये टर्मिनोलॉजी हमने नेशनल इनकम में भी करी थी जब हमने यूनिट 1 किया था. हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स का, उसमें तुमने नॉर्मल रेजिडेंट पढ़ा था. ठीक है. तो अब तुम लोग सोचोगे कि व्हाट इज द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री. सोचो 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 कि आगे मैं आपसे पूछने वाली हूँ. ठीक है. सो सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है BOP का. BOP का सेकेंड पॉइंट हमें कहता है कि इट इज अ समरी स्टेटमेंट. ये एक समरी स्टेटमेंट है जिसके अंदर हम सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हम करते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर. वेरी नाइस. ठीक है. तब तक तो याद ही हो गया होगा कि हम जो भी चीज मेजर करते हैं वो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर ही करते हैं यूजुअली, राइट.
Up. It includes various type of transaction that is relating to the visible items, invisible items, unilateral transfers, or capital transfers. And now you will be asking one question: the visible items, invisible items, unilateral transfers या capital transfers ये क्या होता है? आपने ट्रांसफर वर्ड तो सिखाया है, but ये चार चीजें तो नहीं बताई अपने अब तक. Don't worry. In this chapter, we will be covering this too. ठीक है? And it is the flow concept. अब आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि आपका होमवर्क क्वेश्चन है कि what is flow concept. ये हम डिस्कस करेंगे. ठीक है? ये मैंने आपको कहा था कि स्टॉक कंसेप्ट एंड फ्लो कंसेप्ट आर द टू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ यूनिट 1 नेशनल एग्जाम. और अगर आपको नहीं आता है तो गो चेक आउट द वीडियो इन द प्लेलिस्ट. इट इज गिवन देयर. नेशनल इनकम की वीडियोस को रेफर करें और उसमें आप सीखेंगे स्टॉक एंड फ्लो कैसे काउंट होता है, स्टॉक एंड फ्लो को कैसे हम इवैल्यूएट करते हैं. सो लेट्स कंटिन्यू फर्दर. अब आ गया ये वाला वर्ड रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री. क्या होता है बताओ, जल्दी बताओ, मुझे जल्दी बताओ क्या होता है. तो रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री होता है कि इंडिविजुअल फर्म्स, गवर्नमेंट एजेंसीज ऑफ कंट्री. However, it does not include diplomatic staff. फॉरेन गवर्नमेंट मिलिट्री के पर्पस को ये इंक्लूड नहीं करता, टूरिस्ट को इंक्लूड नहीं करता, माइग्रेटरी पर्पस को ये इंक्लूड नहीं करता. ये सिर्फ उनको इंक्लूड करता है दोज हु आर हैविंग द इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइड इन द कंट्री इटसेल्फ. जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कंट्री में लाई करता है, रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, उन्हीं को कंसीडर किया जाता है. ठीक है? अब इवन दो दे आर वर्किंग एंड ऑपरेटिंग विद इन द domestic territory of the nation, it will not include in the resident of the country. That just because they are belonging to the foreign country, because they are diplomatic staff of another country, they are the foreign military personnel, either they are the migratory workers. So that's why they are not included in the residents of a country वाला portion. यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई भी होना सीधा कमेंट सेक्शन में आने का, जाने का, टाइप कर देने का, भेज देने, कुछ नहीं सोचने का कि यार कैसे डाउट पूछ रहा हूँ, मैं बहुत बचकाना डाउट पूछ रहा हूँ. नहीं, ठीक है? At your level, every doubt matters a lot. It will create a confusion in your mind itself कि ये कैसे आऊँ, ये कैसे आऊँ. ठीक है? Ask question whatever you are feeling. Okay? अब आती है हमारी नेक्स्ट चीज, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस. वही चार वर्ड्स जो भी छोटे पहले हमने पढ़े. विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स एंड कैपिटल ट्रांसफर्स. तो सबसे पहला इस वर्ड का मतलब समझिए. इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? These are the transactions which transfer either the title, either the ownership, or either the money or assets. जिसमें भी कोई टाइटल, कोई ओनरशिप, कोई भी चीज ऐसे ट्रांसफर हो रही हो ना, कोई भी चीज ऐसे इन्वॉल्व हो रही हो ना, इट इज द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस. ठीक है? तो इनकी चार कैटेगरीज आप समझ आएगी कि कौन कौन सी है. इट इज visible items, it is invisible items, it is unilateral transfers, and it is capital transfers. So number one is the visible items. Visible items में क्या होता है कि हम वो चीजों को कंसिडर करते हैं फिजिकल गुड्स को. नाम से समझो ना गाइस, नाम से समझो. नाम क्या कहता है? विजिबल आइटम्स. जो आइटम हमें दिख जाए, दिखेगा कौन? जो फिजिकल होगा. ठीक है? इफ आई से फॉर एग्जांपल दिस इज माय फोन. ठीक है? एंड व्हाट इज दिस इज अ item on here. This is a physical item because I can see it. ठीक है? मैं इसको देख सकता हूँ, इसको टच कर सकता हूँ. ठीक है? तो ऐसे है. दिस इज द फिजिकल गुड दैट इज एक्सपोर्टेड और इधर इम्पोर्टेड. एक्सपोर्ट भी हो रहा है, ये इम्पोर्ट भी हो रहा है. ठीक है? तो दिस इज. नेक्स्ट चीज क्या है? इनविजिबल. एज अ नेम सजेस्ट यार, ये चीज दिखती नहीं है, बट ये झट से नहीं दिखती. क्या नहीं दिखता? उसे दिखता है. पेन सेंस, अगर मैं कोई कॉमोडिटी की बात करूँ, कोई मैं फिजिकल गुड की बात करूँ, कोई मैं गुड की बात करूँ, वो आपको दिखता है. बट गुड के बाद हम क्या लिखते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज लिखते हैं ना. सर्विसेज दिखती हैं? सर्विसेज नहीं दिखती हैं. सर्विसेज नहीं दिखती. कौन सी सर्विसेज नहीं दिखती? कोई सर्विस नहीं दिखती. सर्विसेज आर द intangible in nature, right? तो वो नहीं दिखती. तो बैंकिंग की सर्विस हो, शिपिंग की सर्विस हो, इंश्योरेंस की सर्विस हो, ये नहीं दिखती है. शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस आर नॉट विजिबल, बट दे आर गिविंग इट. तुम दे रहे होते हो सर्विसेज को, आप ले भी रहे हो. अब यही देख लो, मैं आपको सर्विस ही दे रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ. आई एम जस्ट rendering a service of teaching, right? But is it visible? It is a physical good. Whatever I am saying to you, is it visible? No, my words are not visible. My knowledge is not visible to you. My knowledge is just a feeling. ठीक है? Feeling how? कैसे feeling कैसे consider होगी? क्योंकि ये जो knowledge है that I am sharing with you is some word that you are learning, you are remembering and using it. Okay, but it is not something that you are having. You haven't purchased it from this side, right?
आपने मुझसे खरीदा नहीं है। So I hope you have clear हो गया होगा what is the visible items and what are the invisible items. Now come to the unilateral transfers. यूनी का मतलब क्या होता है? यूनी लिखते हैं ना, ऐसे हम बार बार आते हैं यूनिलैटरल, ठीक है। फिर यूनी के साथ हम लगाते हैं बहुत सारे वर्ड्स, यूनी इज अ प्रीफिक्स, राइट? क्या होता है इसका मतलब? यूनी मीन्स वन, यूनी मीन्स वन, तो इट मीन्स इसका मतलब क्या हो, यूनिलैटरल, एक तरफा, ठीक है, वन साइडेड, वन वे। तो यूनिलैटरल ट्रांसफर मतलब एक तरफा ट्रांजैक्शन हुआ, मतलब मैंने आपको दिया बट आपने मुझे कुछ नहीं दिया, ठीक है। बट गाइस डोंट डू लाइक दिस कि मैंने आपको ज्ञान दिया और आपने मुझे कुछ नहीं दिया। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, प्रेस द बेल आइकन, ठीक है। तो ये आपके काम है, आपको करने ही है, ठीक है। अब unilateral transfers, it includes the gifts, it includes the personal remittances, it includes the one-way transactions, ठीक है। ये one-way transactions को include करता है, जिसके अंदर हम gifts देते हैं, जिसके अंदर हम remittances देते हैं, जिसके अंदर हम donations देते हैं, जिसके अंदर we are providing any aid, तो जिसके अंदर हम कोई ऐसा ट्रांसफर होगा जिसके अंदर हम कोई aid provide करेंगे, तो it will all be considered under unilateral transfer. Number 4, ठीक है। नंबर 4 जो होता है कैपिटल ट्रांसफर। कैपिटल ट्रांसफर में क्या होगा, आपने अपने कैपिटल को क्या क्या सीखा है, नॉन टेक्निकल नेचर सीखा आपने, कैपिटल यही सीखा ना, कभी लास्ट यूनिट में सीखा कैपिटल, है ना। तो उसमें आपने सीखा नॉन रिकरिंग इन नेचर, राइट। कैपिटल ट्रांसफर इज समव्हाट कैपिटल रिसीप्ट्स एंड द कैपिटल पेड। अब मैं नहीं बताऊंगा क्या होता है कैपिटल रिसीप्ट्स, मैं नहीं बताऊंगा, ये नहीं बताऊंगा क्योंकि हमने यही प्रीवियस सेशन में किया है कैपिटल रिसीप्ट्स क्या हो। अब आप बताओ उस कमेंट सेक्शन में कैपिटल क्या होता है। दिस इज द होमवर्क नंबर 2 फॉर यू गाइस, ठीक है। होमवर्क नंबर 2, you have to do this, all of you that are watching this video, you have to do this two homework because this will help you in dividing the topics that you are learning. गलत लिखोगे कोई बात नहीं, ट्राई एट, ठीक है। डोंट स्टेप इट अप कि भाई मैं आके लिखूंगा, मैं तो नहीं लिखूंगा, डोंट डू लाइक दिस, लिखो, ठीक है। तो ध्यान से समझ आया आपको चारों टाइप्स में इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डी। अब आपने बताया तो आपने बता तो दिया कि इट इज अ समराइज्ड स्टेटमेंट, इट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। हम ये तो बता दो कि अकाउंटिंग में कौन से रूल्स यूज करने हैं, डेबिट और टर्म्स यूज करने हैं, क्रेडिट और डोजर यूज करने हैं, क्या यूज करना है, तो बताया नहीं आपने। अब हो गया, अच्छा है, क्या है। तो देखो जैसे अकाउंट्स में हम करते हैं डबल एंट्री सिस्टम, एक ही चीज का दो इम्पैक्ट पड़ते हैं, इधर इधर भी सेम वही होता है बीओपी में, ठीक है। तो एक ही चीज के दो इम्पैक्ट इधर ही पड़ेगा, डबल एंट्री सिस्टम इधर भी यूज होगा, ठीक है। तो बीओपी has two accounting sides. Number one is the credit side, number two is the debit side, as the same as the accounts have. ठीक है। क्रेडिट साइड में क्या होता है, ऑल द इनफ्लोज और सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड, ऑल द आउटफ्लोज, इनफ्लोज जितने आ रहे हैं क्रेडिट साइड में जाएंगे, आउटफ्लोज जितने जा रहे हैं डेबिट साइड। बेसिक क्लियर हुआ। Inflows, it means what? It means that if something is coming, if something is coming, it means it is considered as an inflow. If something is going out, it means it is considered as an outflow. So inflow means it is considered under the side of credit side, and outflow it will be considered under the side of debit side. Clear enough now? And in the accounting sense, you can say that you will be just like a trial balance. It's prepared as per the double entry system. And in the economic sense, we can say BOP need not always be equal. It means BOP can be balanced, it can be surplus, it can be deficit. क्योंकि हम अगर ट्रायल बैलेंस कंसिडर करेंगे तो इट नीड्स टू बी इक्वल, इट नीड्स टू बी इक्वल, क्योंकि अगर इक्वल नहीं है इट मींस वी आर मेकिंग समथिंग एरर्स और मिस्टेक्स, राइट। बट if you take it in the economic sense, so it not need to be equal, it not need to be equal। थ्री तरीके की चीजों से बैलेंस मतलब इक्वल हो भी सकता है, सरप्लस क्या पता ज्यादा पैसे आ रहे हो कम पैसे जा रहे हैं, डेफिसिट मतलब क्या पता ज्यादा खर्चा हो रहा हो कम पैसे आ रहे हैं, anything can happen। So these are the three cases that can happen and we will discuss it later, ठीक है। We will discuss all these three in detail later, okay। So there is another terminology like कह सकते हैं कि हम बैलेंस ऑफ पेमेंट का छोटा भाई इसको कह सकते हैं, that is balance of trade। अब ये क्या हो, balance of payment is the summarized accounting statement, right, which records all the economic transactions between the residents of the country and the rest of the world. But in the balance of trade, only the difference between the amount of export and import of the visible items will be recorded here, not the invisible items, not the unilateral transfer, not the capital transfer. Okay, only the first capital.
तो उसका एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का जो डिफरेंस आएगा वो बैलेंस ऑफ ट्रेड में यूज होगा। तो BOT is also known as the balance of visible trade or the trade balance। इसके दो नाम है हमारे पास, बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड और the trade balance। ठीक है, तो ये दो नाम हमारे पास और है। बैलेंस ऑन बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब है कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है उसका क्या हिसाब है। जैसे कि मैंने बोला कि BOP के अंदर अगर इक्वल नहीं भी होते तो कोई बात नहीं, हमारे तीन केस से बैलेंस है, सरप्लस है, डेफिसिट है। इसका क्या सीन है? इसका सीन इस प्रकार है कुछ कि BOT का बैलेंस ऑफ ट्रेड का इट नॉट नीड टू बी बैलेंस इटसेल्फ। ठीक है, एक्सपोर्ट डज नॉट नीड टू बी इक्वल ऑलवेज टू द इम्पोर्ट। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी सरप्लस, इट कैन बी डेफिसिट। ठीक है, सरप्लस का मतलब क्या हो रहा है कि कंपनी के एक्सपोर्ट ज्यादा है और इम्पोर्ट कम। ठीक है, कंपनी के एक्सपोर्ट ज्यादा है और इम्पोर्ट कम है। इट इज अ फेवरेबल कंडीशन कि कंपनी ज्यादा फल बेच रही है, कम मंगवा रही है, तो इट मींस है कि डिपेंडेंसी कम हो रही है कंपनी की कंट्री की। सॉरी इफ आई बीन सेइंग सॉरी गाइस, इट इज कंट्री की डिपेंडेंसी कम हो रही है, तो इट इज अ फेवरेबल कंडीशन फॉर द कंट्री इटसेल्फ। But if it is going in a deficit condition, if the BOT is in deficit condition, it means that the import is high, very high, and export is very less. It means that the country is delivering very less amount of goods to the foreign country and taking more amount of goods from that country, more amount of goods and services from that country. It means that it is in deficit condition. It is an unfavorable condition of the country. Right? Is everything clear till of now? Every तो नहीं हो रहा ना कि बहुत ज्यादा ही आगे बढ़ा दिया, because it is not tough, because it is not difficult, it is a very easy topic. It's a very easy topic of your macroeconomics of class 12. Very easy, very basic, and कह सकते हैं कि इसमें से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, बहुत चैप्टर है, पूरा चैप्टर तो उसका होता नहीं है पेपर में, तो क्वेश्चन आएगा and he will be getting a competency analytical based question out of this chapter. So he prepared it very deeply, क्योंकि आपको इसमें से केसेस उठ के आएंगे, आपको इसमें से एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन उत्तर आएंगे, आपको उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन उत्तर आएंगे। ठीक है, एंड एट द एंड वी विल बी प्रैक्टिसिंग दैट क्वेश्चंस आल्सो। ओके, now the most important, the favorite question of the examiners and all the of your school teachers, that is what is the difference between BOP and BOT। ये दो टर्मिनोलॉजीज आप पढ़ रहे हो, BOP एक पढ़ रहे हो, BOT एक पढ़ रहे हो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू? ठीक है, डिफरेंस बहुत सिंपल है। BOP is somewhat, it is a BOP, I'm saying balance of payment is somewhat an accounting statement. It is a summarized accounting statement which includes all the economic transactions between the resident of the country and the rest of the world. Between the resident of the country and the rest of the world. Whereas the BOT, the balance of trade, it is a difference between the exports of the goods and the imports of the goods of the visible items. Okay, very important word, visible items. If you miss it, you will lose your marks. Number two difference is the components. BOP, balance of payment, includes all the four components, that is the visible items, invisible items, unilateral transfers, and capital transfers. Whereas BOT, balance of trade, includes only the physical items. This is the number one gap. Number three difference, capital transactions. It all records the transaction related to capital nature. BOP, balance of payment, records all the transaction that is in capital nature, but BOP does not record any transaction of capital nature because it is not included in the capital transfers. Right? Number four difference. It is a wider concept. It includes BOP is a wider concept. It is a बड़ा concept, and it includes BOP means अगर हम वेन डायग्राम बनाएं, वेन डायग्राम में हमको BOP बड़ा सर्कल बनेगा and BOT is a smaller circle there. ठीक है? And in BOT, it is a narrower concept and it is a part of BOP. Balance of trade, it is a part of BOP. Settlement. Unfavorable BOP cannot be met out with favorable BOP. ठीक है, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में कुछ अनफेवरेबल है तो वो फेवरेबल ऑफ BOT, बैलेंस ऑफ ट्रेड से नहीं हो सकता सेटल भाई, क्योंकि BOT is just a smaller thing and BOP is just a wider thing, right? Whereas on the other side, if we say balance of trade, unfavorable balance of trade can be met out from favorable BOP. अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा तो वो फेवरेबल BOP से मेट आउट हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा, क्योंकि balance of payment is just a wider thing. It is a bigger concept in nature. It has a bigger nature. So unfavorable अगर balance of trade होता है ना तो वो BOP बना देगा, ठीक है? So this is from my side for this lecture. इतना ही आज के लिए समझते, इतना ही आज के लिए करते हैं, because it is still too much for a particular lecture. So go prepare your notes, learn these all concepts,
बाय हार्ट कर लो यार, आसानी है, ज्यादा मुश्किल तो है नहीं, ठीक है। जगह आपने नेशनल इनकम कर लिया, आपने गवर्नमेंट बजट कर लिया, तो ये भी तो आपके लिए बाय हार्ट खेलोगे, चाहिए सीरियस। तो स्टूडेंट्स माइट फाइंड इट डिफिकल्ट, स्टूडेंट्स को लगता है कि बीओपी एंड फॉरेन एक्सचेंज आर समवॉट, हम आपको समझ ही नहीं है, हमें कुछ कॉन्सेप्ट डाइजेस्ट नहीं है यार, क्योंकि सीरियसली बात सही टू यू गाइस, these are the concept जिससे आप रियल लाइफ में डील नहीं कर रहे हैं। बीओपी, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेट से आप डेली लाइफ में इतना ज्यादा रिलेट नहीं करते जितना आप नेशनल इनकम से, मनी बैंकिंग से, गवर्नमेंट से करते हैं, ठीक है। So that chapters will become something easier to you because you are relating things regularly, ठीक है। But these topics are easy, तो आप इसको समझो, कोशिश करो, इसकी ब्रेकिंग न्यूज पढ़नी है, न्यूज को न्यूज के बारे में पढ़ो, थोड़ा सा सोचो, एक्सपोर्ट्स के बारे में पढ़ो, इम्पोर्ट्स के बारे में पढ़ो, ठीक है, तो आपको समझ आएगा, तो इंटरेस्ट बिल्डअप करो, ठीक है। सो टिल नाउ that that is from my side. We will be continuing this unit in the next lesson. So till then, stay safe, stay healthy. Thank you so much for watching this video and stay tuned with the channel Studify Success. And do share, like, comment on the video. And if you are facing any doubt, do let me know. Until then, stay safe, stay healthy, and kindly study macroeconomics because we are targeting 40 and 40 in this one. Thank you so much.